अपने एक वेबिनार के टाइम पे ही, मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था तो उसमें मैंने सिखाया था। तो वही वीडियो मैं आपको प्ले करके यहाँ पे दिखा देता हूँ एंड उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप अपना ऑनलाइन कोर्स सेटअप कर सकते हैं यूजिंग द सॉफ्टवेयर फ्लेक्सी फनल्स। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट मी नो, कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? ये आपको दिखाई दे रहा है? सक्सेस मास्टरी 7 आवर क्लाइंट गेटिंग ट्रेनिंग, कैन यू सी दिस? मैं आपको फटाफट से वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे अपना कोर्स ऑनलाइन बना सकते हैं और उसके लिए आपको किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं, राइट। एंड लेट मी शो यू कि आप ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज माय फ्लेक्सीफाइनेंस लॉगिन। अच्छा, मेरे को एक बार एक चीज बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिसाइडेड और हाउ मेनी ऑफ यू हैव एन आइडिया कि आपका कोर्स का निश क्या होने वाला है? एक बार मेरे को चैट पे टाइप करके बताओगे व्हाट इज गोइंग टू बी द निश ऑफ योर कोर्स। किस चीज के ऊपर आप अपना कोर्स बनाने वाले हैं? Okay, so let me click on creating a new project and यहाँ पे I'm going to say select LOA, okay, LOA, sorry, launch a course. So let's say मेरे पे multiple options आए हैं यहाँ पे, English speaking, LOA, मैं यहीं से confused हो गया था, parenting, stock market trading, photography, web development. Okay, I can pick any option. Maybe I can pick parenting, just an example. Okay, parenting course. Let me click on create a new project. And let me show you how you can do all of these things very, very easily, okay? Okay, सबसे पहले मैं आपको आपका कोर्स बना के दिखा देता हूँ कि how easy it is to create your course. Let's say I go to my YouTube channel. All right. Just for the sake of the example, let's suppose आप अपने YouTube channel पे आपने अपने कोर्स के वीडियोस डाले, just an example, okay? And आपने उनको of course unlisted करा. And let's suppose you are creating a course, okay, parenting course. Let me click over here. Let me click on creating the course. And अब यहाँ पे जाके I will click on creating a new module. So नविता, आपने मेरे को कहा था कि ये पेरेंटिंग का कोर्स बनेगा, एक बार कुछ मेरे को मॉड्यूल्स और लेसन्स के नाम बताएंगे? लेट्स सपोज चाइल्ड हैबिट्स, ओके, मैं खुद रैंडमली कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स यू कैन गाइड मी बेटर, ओके। एंड लेट्स सपोज द फर्स्ट वीडियो इज, मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड मे बी मैं अपने YouTube वीडियो का लिंक डालूंगा एंड माय वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माय कोर्स इज रेडी ओवर हियर। ऑलराइट, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएटिंग अ न्यू मॉड्यूल and then the second module can be eating habits. Just an example. Again, I'm not a parenting coach, I'm not even a parent, so I'm not there to guide you regarding parenting, right? But yeah, I'm just typing randomly whatever is coming to my mind, okay? Alright, so आपको एक और चीज दिखाता हूँ। एक ये मेरी प्लेलिस्ट है YouTube के ऊपर, इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को I can import within a second, okay? And just like that, so many videos are added already into my course. Have a look at this. Have a look at this. ये मेरा कोर्स ऑलरेडी रेडी हो चुका है. Of course, you can keep on adding more videos, but this is my course which is already ready. इसका एक मॉड्यूल यहाँ पे, इसका एक मॉड्यूल यहाँ पे है. और अगर किसी वीडियो को मेरे को ऊपर नीचे करना है तो I can simple drag and drop. How easy it is? Give me a one in the chat box if you are finding it easy. और ये अभी मेरा कोर्स रेडी हुआ है. अभी इस कोर्स का मैं आपको सेल्स पेज, वेबिनार पेज, अगर आपको वेबिनार पेज करना है तो वो सारी चीजें अभी रेडी करके दिखाता हूँ in just 5 minutes. Okay, let me click on adding a new page and let's say I call it parenting webinar page. All right, creating a new page which is going to be the webinar registration page. How many of you want to do webinars, by the way? यहाँ पे आपके पास ही you can start with a blank template which is good enough. आप उससे अपने वेबिनार कर सकते हैं, अपना वेबिनार का पेज बना सकते हैं. और we have given you templates already. Alright, आप यहाँ पे जाके वेबिनार का कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आई सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके. एंड यहाँ पे आपका वेबिनार का रजिस्ट्रेशन पेज रेडी हो रहा है. लेट्स ऑल्सो गेट अ चेकआउट पेज रेडी, जिसकी वजह से आप अपने कोर्स को सेल कर पाएंगे, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू पेरेंटिंग चेकआउट, हाउ मेनी ऑफ यू are going to be totally amazed कि when you are going to see within the next 5 minutes आपका कोर्स रेडी, आपका सेल्स पेज रेडी, आपका चेकआउट पेज रेडी है. और जैसे ही कोई बाय करेगा उनका ऑनलाइन एक्सेस जाना आपके कस्टमर को, वो सब भी रेडी होगा in just 5 minutes. And all of it, no coding,
no development, no technical expertise, nothing. Very, very simple. Okay. Let's suppose I'm going to select this particular checkout page template. Okay. So there are multiple templates. You can select any of them. ओके सो ये मेरा वेबिनार का पेज था. इसको चेक करते हैं एंड इसमें जाके एडिटिंग करते हैं. आपका वेबिनार का पेज रेडी करते हैं एंड इसी में ही आपका लेट्स से सेल्स पेज भी रेडी कर सकते हैं. ओके and I will be doing things quickly simply because I need to teach you a lot of things, but you can do things at your own pace, all the things. Okay. अब जैसे ये एक पेज है जिसमें लिखा हुआ है हाउ टू क्रैक मोर मॉडलिंग एंड फोटोशूट गिग्स विद बिग ब्रांड्स. ओके लेट्स सपोज आई वांट टू चेंज दिस. हाउ टू टीच your child to be what do I say to be more energetic. I don't know. All right, just typing randomly. Okay, or let's suppose मैंने यहाँ पे कुछ भी randomly यहाँ पे type करा and let's suppose I want to increase the size. Let's suppose मेरे को यहाँ पे अपने इस पेज इसका color change करना है, maybe red, और maybe ये जो button है यहाँ पे save my free spot, मेरे को इस बटन का जो कलर है बैकग्राउंड कलर इसको चेंज करना है. फ्री मास्टर क्लास फॉर लेट्स से पेरेंट्स, राइट. मेरे को यहाँ पे डेट वगैरह चेंज करनी है. आई कैन डू दैट एंड लेट्स सपोज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न एंड लेट्स से मेरे को यहाँ पे फोटोग्राफ बदलनी है. यहाँ पे अभी एक रैंडमली एक फोटोग्राफ डली हुई है. आई वांट टू पुट माय ओन फोटोग्राफ. आई एम नॉट श्योर. एक यहाँ पे मेरी एक ये वाली फोटोग्राफ डली हुई है. I mean एक बॉक्स बना हुआ है about Saurabh Bhatnagar. You can put your own name of course, right. He is super cool. Not sure. You can type anything over there and then you can replace the things that you want to replace. अगर आपको background color वगैरह के साथ छेड़छाड़ करनी है, I mean you can play ahead and do any kind of stuff. जैसे ये बटन है, let's suppose आपको इस बटन के साइज को छोटा बड़ा करना है, you can do that. आपको लेट्स से इसको स्पेसिंग देनी है, आपको इसे ऊपर नीचे लेके जाना है, यू कैन डू दैट. आई मीन ऑल द थिंग्स यू कैन डू वेरी वेरी इजीली. व्हाई यू श्योर? हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइंडिंग इट वेरी इजी कि इसमें एडिटिंग करना इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट इजी? गिव मी अ 111 इन द चैट बॉक्स इफ यू फील दैट it's quite easy and there is nothing, no coding or anything which is required. And let's suppose यहाँ पे एक ये वीडियो है जिसको मेरे को रिप्लेस करना है. ओके let's say I will select my interview with Irfan Pathan and मैंने यहाँ पे गया सेटिंग्स में गया और यहाँ पे मैंने ये वाले वीडियो का लिंक डाल दिया and I'm done. And at the same time let's suppose मेरे को कोई नया सेक्शन बनाना है. I just don't want to use the section that is already available. In fact I want to create something new and let's suppose I want to create something new like this 8x4. तो यहाँ पे let's suppose लेट्स से ये वाला वीडियो मेरे को ऊपर चाहिए. ओके मैंने इसको डुप्लीकेट करा और मैंने इसे उठा के यहाँ पे वीडियो को ऊपर यहाँ पे डाल दिया. एंड लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू जनरेट लीड्स? तो आज के बाद आपको जो लीड्स जनरेट करनी है, आपको यहाँ पे आपका बना बनाया फॉर्म मिल गया है एंड ओवर हियर लेट्स सपोज आपको अपने लीड्स में लेट्स सपोज उनका फोन नंबर भी चाहिए. ओके एंड यू क्लिक ऑन ऐड. तो नाउ यू कैन ऑल्सो कलेक्ट देयर फोन नंबर एंड लेट्स सी कि आप कितना इजीली उसकी डिजाइनिंग कर पाएंगे. लेट्स सपोज यू वांट टू मेक द फॉर्म बिगर, यू कैन डू दैट. लेट्स से फॉर्म सेटिंग्स के अंदर आपको जो बीच का कलर है, लेट्स सपोज यू वांट टू चेंज दैट, यू कैन डू इट. आपको इसे सेंटर अलाइन करना है, यू कैन डू दैट. you don't need to be dependent on the coders or anybody anymore, right. ये मेरे को अच्छा ही लग रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ. एंड लेट्स से फॉर्म सेटिंग के अंदर ही ये जो मेरा बटन है, इस बटन का टेक्स्ट साइज अगर मेरे को बड़ा करना है, आई कैन डू इट. एट द सेम टाइम जो बटन का मेरा फुल विड्थ है, इसको मैं फुल विड्थ कर देता हूँ. एंड हाउ इजी इट वाज टू सेट अप योर ओन होल सिस्टम. एंड हैव अ लुक एट दिस. मेरे को अगर इसको पीछे कोई बैकग्राउंड कलर देना है, आई कैन डू इट वेरी वेरी क्विकली. लेट्स सपोज दिस व्हाटएवर इट इज. एंड यहाँ पे मेरे को एक हेडलाइन डालनी है, तो I can simply drag and drop sign up below, and then I want to make it bold, I can do it. Now please tell me this, how many of you have this feeling for sure right now कि आज के बाद because of the technical dependencies you are not going to be stuck in creating your online selling systems? Give me a 1 in the chat box. That particular problem is sorted, right? Okay, have a look at this. मैं आपको इसका पेज का वो बना के पेज दिखा देता हूँ कि आपका पेज कैसा बन के आया है. Okay, let me just show you.
लेट मी गो टू द पब्लिश URL, जो पेज अभी अभी हमने पब्लिश करा है. And this is the headline that we selected. This is the color that we selected. This is the box that we added. This is the name that we added. And this is the video that we added. This is the form that we added. And all the things, all the settings that we did, we have been able to do very, very quickly, very, very easily. और अगर मैं इसको ऐसे भी देखूंगा छोटा करके, which means कि ये मोबाइल पे कैसा लगेगा, तो अगर आप देखोगे मोबाइल पे भी all the formatting is done by itself. आज से पहले आपको मोबाइल के लिए डेवलपर्स को, कोडर्स को अलग से पे करना होता था, but that is not the case. You know, your everything you can do completely on your own. Does that make sense? एंड आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, आपके पास लीड्स कैसे आएंगी. ओके, लेट्स सपोज व्हेन समबडी इज साइनिंग अप फॉर इट, ओके, लेट्स सपोज इफ समबडी इज साइनिंग अप फॉर इट, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो आपने पेज बनाया था अपना, आप यहाँ पे इस पेज पे जाके उसके रिपोर्ट्स पे जाओगे एंड यू कैन सी द डेटा ऑफ द पर्सन हु हैज साइंड अप. Can you see this? Give me a 1. Right? And now this is like becoming way too easy for you. एक क्विकली आपका चेकआउट पेज भी रेडी कर देते हैं एंड मैं आपको एक क्विकली ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपका से कोर्स का सेलिंग होएगा और कैसे आपके कस्टमर्स को कोर्स का एक्सेस मिलेगा. राइट, लेट मी शो यू दैट थिंग वेरी वेरी क्विकली. एंड आई वाज एबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स probably within 5 to 7 minutes, and that too when I was talking to you. If I was not talking to you, then I can do it even quicker. एनीवेज, तो यहाँ पे जाके मैंने अपना लेट्स सपोज मेरे को जो भी चीजें और कलेक्ट करनी है मैंने वो सेलेक्ट करा एंड ये मेरा चेकआउट पेज है, इसको मैं क्विकली पब्लिश कर देता हूँ. आई एम नॉट डूइंग एनी चेंजेस ओवर हियर, राइट, क्योंकि आई वांट टू सेव सम टाइम. आई एम नॉट डूइंग एनी चेंजेस एंड वी विल वेट फॉर इट बिकॉज इट इज पब्लिशिंग. यू कैन सी इट, राइट. ऑलराइट, सो दिस इज माय चेकआउट पेज व्हिच हैज गॉट रेडी. ओके, this is my checkout page which has got ready. And now finally मेरे को एक काम करना है छोटा सा, वो ये कि मेरा जो कोर्स बना था, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ. सिंपल सेटिंग, इसके प्राइसिंग सेटिंग्स में जाएंगे एंड आई विल क्रिएट अ बंडल, पेरेंटिंग कोर्स 111 एंड इसके अंदर आई विल सेलेक्ट द मॉड्यूल्स जिसका मेरे को एक्सेस देना है मेरे स्टूडेंट्स को. ओके, एंड एट द सेम टाइम जब कोई इसे बाय करेगा मेरे कोर्स को, तो उनके पास नेम और ईमेल किस नाम से ईमेल जाना चाहिए. लेट्स सपोज नविता, आपने बोला था आपको ये वाला कोर्स बनाना है, सो लेट्स से आई डोंट नो योर ईमेल आईडी, सो आई विल पुट माय ईमेल आईडी. ओके, ऑलराइट, तो आपके नाम से कोर्स का ईमेल जाएगा. एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट सेल करना है. राइट, सो क्योंकि मेरे को कोर्स सेल करना है तो मेरे को प्रोडक्ट को कोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा, which is going to be another 1 minute process. That's it. आप यहाँ पे जाओगे, मेंबरशिप प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे. How many of you are finding it easy? Yes, आपके लिए स्टेप्स शायद थोड़े से ज्यादा हो गए होंगे अभी तक, लेकिन यू कैन गेट अ फील कि जो स्टेप्स है उसमें कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड नहीं है. अगर आप देखोगे और देख के करोगे तो इजीली यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स. राइट, यू आर गेटिंग दैट फीलिंग, राइट. ओके, सो पेरेंटिंग कोर्स. ओके, पेमेंट ऑप्शन, क्योंकि आपको पेमेंट कलेक्ट करना है, वेरी इजी, 1 click you will be able to start collecting payments, right? So easy. And इसके लिए मेरे को डेवलपर को $1000 पे करने पड़े थे, and now you can do it so quickly. So let's suppose मेरे कोर्स का जो प्राइस है वो ₹10 है, just an example, you know, as of now. And then let's suppose मेरे को इसका सेल्स पेज कनेक्ट करना है, तो सेल्स पेज, let's say जो मेरा वेबिनार का पेज था इसको मैंने सेल्स पेज बना दिया, and जो मेरा चेकआउट पेज मैंने बनाया था इसको मैंने चेकआउट पेज सेलेक्ट कर लिया. And what do I want to do after the purchase happens? Let's suppose they should be, उनको कोर्स का एक्सेस मिलना चाहिए. That's the whole thing, right? तो यहाँ पे मेरा कोर्स का एक्सेस उनको मिल जाएगा. Alright, so now मेरा सेल्स पेज रेडी है, मेरा चेकआउट पेज रेडी है, मेरा कोर्स रेडी है एंड मेरा प्रोडक्ट रेडी है. लेट मी शो यू कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट को कैसे बाय करेंगे और कैसे उनको एक्सेस मिलेगा. ठीक है, वी आर डन, द होल सेटअप इज डन एंड इट हार्डली टुक मी एंटायर सेटअप लाइक 15 मिनट्स प्रोबेबली. ओके, सो ये जो आपका बटन है, आपने ये जो अपना सेल्स पेज बनाया था, वेबिनार पेज बनाया था, व्हाटएवर इट इज, आप इस बटन पे जाओगे एंड इस बटन पे जाके आप इसको प्रोडक्ट से कनेक्ट करोगे, जो प्रोडक्ट हमने अभी क्रिएट करा था, पेरेंटिंग कोर्स. ओके, एंड वी आर गोइंग टू पब्लिश इट एंड नाउ दिस इज योर सेल्स पेज व्हिच इज रेडी.
Let me go ahead and make the purchase. Let me bring my phone so I can make the purchase. Ranjay, I can see. Ranjay, let me get back to you. All right. So let me go to the published URL. Okay. So now this is your sales page which is ready. ये आपके customers को दिखेगा. Okay. मतलब आप इसमें जो भी changes करेंगे, you can do it very easily. And now when your customers will click on this, they will be taken to the checkout page. Checkout page पे आप देख रहे हो जो कोर्स आपने बनाया था वो यहाँ पे visible है, जो प्राइस आपने सेलेक्ट करा था वो यहाँ पे visible है. They can put the details. Okay, they can put the details. For example, I'm putting my random details, whatever XYZ. I'm just going to make the payment. Okay, so this is how your customers, let's suppose when they are paying for your course, okay, I just paid for it. And this is how easily आपके customers को उनके course का access मिल जाएगा. See how easy it is. And let me click on this. यहाँ पे आपके कोर्स का लॉगिन बन चुका है, आपका पूरा मेंबरशिप एरिया रेडी हो चुका है, आपके कस्टमर्स को उनका ईमेल आईडी और उनका पासवर्ड मिल चुका है. Let me show you. All right. And now they are able to log in inside their course and they are able to see कि ये उनको पेरेंटिंग कोर्स का एक्सेस मिल चुका है. And जो वीडियोस हमने यहाँ पे डाले थे, they are there. You can see this, right? मेरे को जो भी वीडियो देखना है, I can click on this, I can click on this, I can click on this, and my entire course and the whole selling system of my course is ready. Give me a wow in the chat box if you found the entire thing way too easy. And now you can do it. Most importantly, you can do it, right? Awesome. ओके सो जो आपका कोर्स बनाने का रिक्वायरमेंट है, आपका जो पूरा बैकएंड सेटअप करने का रिक्वायरमेंट है, जो पूरा आपको कोर्स आपका ऑटोमेशन पे बन भी जाए, लोगों को एक्सेस मिल भी जाए, उनको उनको वो आप उनसे पैसे भी चार्ज कर लो, उनको ट्रेनिंग भी खुद से डिलीवर हो जाएगी, आपके पास अमाउंट भी खुद से आ जाएगा. एवरीथिंग विल बी डन ऑन कंप्लीट ऑटोमेशन. And that exact thing our customers are already doing. जो अभी मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाई थी, जैसे चिराग भी हैं, generated 12 lakh rupees of pure profit from a last boot camp launch. 40 people paid us 30,000 rupees for my mentorship batch. सिमिलरली ये ओम प्रकाश के एक क्लाइंट है, कोचिंग क्लाइंट है, जिन्होंने एक महीने में $30,000 का रेवेन्यू जनरेट करा था बाय यूजिंग द सेम थिंग. सुशील एक और यहाँ पे